Hello friends, once again to DD Tutorials. We dream, we design and we deliver. We are back with our next chapter for Drona Climax Crash Course series. So I myself your DD sir, let us start. So today our chapter is going to be for mathematics and we are going to deal with circle. Yeah friends, we are going to enter in the coordinate geometry of mathematics in which we are going to deal with the first chapter as circle. So first of all, starting with the equation of an circle. So the curve traced by a moving point is called its circumference. That is, the equation of any circle is satisfied by the coordinate of point. It means जो हमें कोऑर्डिनेट सर्कमफेरेंस के ऊपर से जो मिले हैं वो पॉइंट सर्कल को सेटिस्फाई, सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए. या फिर हम कह सकते थे इक्वेशन ऑफ ए सर्कल मींस इक्वेशन ऑफ सर्कमफेरेंस, यानी सर्कल की इक्वेशन सर्कल के सर्कमफेरेंस की इक्वेशन से सेम होगी. दो तीन और डेफिनेशन है तो आप उनसे जा सकते हो. यू कैन जस्ट गो थ्रू द अदर डेफिनेशंस. Let us move forward. So we are going to deal with the basic theorems and results of circles. So पहला रिजल्ट यहाँ पे दिया गया है concentric circles. So the circle having same circle, यानी दो सर्कल जिसके सेंटर सेम हो, यानी एक सेंटर से लेके दो अलग अलग रेडियस लेकर जब हम दो सर्कल बनाएं उसे हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहेंगे. दूसरा है कॉन्करेंट सर्कल. दो सर्कल जिनकी रेडियस सेम हो या फिर दोनों ओवरलैप हुए हो वैसे सर्कल को हम कॉन्करेंट सर्कल कहेंगे. The third point here given is in concurrent arc if they are the same degree measured at the center, यानी सर्कल से सेंटर से सेम डिग्री पर बनाए हुए आर्क कॉन्करेंट आर्क कहलाते हैं. थियरम्स दी गई है फ्रेंड्स यहाँ पे, और पहली थियरम है इफ टू आर्क ऑफ द सर्कल आर कॉन्करेंट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर आल्सो इक्वल, यानी अगर सर्कल कॉन्करेंट आर्क वाला है तो उस कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी इक्वल होगी और उसका कन्वर्स भी ट्रू है. देन दूसरा पॉइंट है इफ इक्वल पॉइंट्स ऑफ द सर्कल शुड ऑब्टेन इक्वल एंगल एट सेंटर, यानी सर्कल के दो इक्वल कॉर्ड दो सर्कल के लिए सेम एंगल सेंटर पे सबटेंड करेंगे, उसका कन्वर्स भी ट्रू है. द थियरम 2 स्टेट्स दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी कोई भी सर्कल से, लेट अस टेक अ न्यू पेज. So let us see that the perpendicular from the center of the circle to the chord bisect the chord, यानी सर्कल से अगर सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा. द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड टू द सर्कल ऑफ सेंटर इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, यानी ये उसका कन्वर्स भी ट्रू है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट एट इट्स सेंटर, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दो कॉर्ड्स के सेंटर पे हमेशा मीट करते हैं. थर्ड थियरम दी गई है यहाँ पे, थर्ड थियरम यहाँ पे दी इफ एनी वन देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिस थ्रू थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट, यानी एक सर्कल बनाने के लिए हमें कम से कम 3 पॉइंट्स दिए होने चाहिए. दूसरा सेकंड पॉइंट इसमें गिवन इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट इन टू पोजीशन एंड द लाइन जॉइनिंग द सर्कल इज सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द बाइसेक्टर ऑफ द सर्कल. सो आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट हियर गिवन इज थियरम 4 स्टेट्स ईच कॉर्ड ऑफ द सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी सर्कल की सारी कॉर्ड्स सेंटर से हमेशा इक्विडिस्टेंस होती है, लेकिन कंडीशन है कि कॉर्ड्स दोनों इक्वल होनी चाहिए. दूसरा पॉइंट दिया है इफ टू इक्वल कॉर्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल एंड द सेंटर ऑफ सर्कल विल लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द टू कॉर्ड, यानी एंगल बाइसेक्टर पे सर्कल सेंटर ऑफ द सर्कल लाई करेगा. थर्ड पॉइंट है ऑफ एनी टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल लार्जर विल बी नियरर टू द सेंटर, यानी दो कॉर्ड्स अगर सर्कल से बनाई है और हमें पता है कि एक का डिस्टेंस सर्कल से 2 सेंटीमीटर है और एक का 3 सेंटीमीटर, तो हमें पता होना चाहिए कि 2 सेंटीमीटर वाली कॉर्ड लंबी होगी. देन थियरम 5 स्टेट्स द डिग्री मेजर्ड ऑफ एन आर्क और एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट बाय इट्स एट एनी अदर पॉइंट ऑन इट्स अल्टरनेट सेगमेंट. तो ये फिगर यहाँ पे दिया हुआ है कि सेंटर से अगर कोई आर्क एंगल बना रहा है वो 2 थीटा हो तो उसी आर्क के द्वारा सर्कल के ऊपर बनाया गया एंगल उससे आधा होगा, यानी अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल 30 डिग्री होगा. देन नेक्स्ट पॉइंट स्टेट्स दैट एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल, यानी एक ही सेगमेंट के द्वारा बनाए गए दो पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड हो रहे हैं वो दोनों एंगल इक्वल होंगे. द थर्ड पॉइंट स्टेट दैट द सेमी एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, यानी सर्कल के डायमीटर से लेके अगर सर्कल के किसी पॉइंट पे अगर लाइन ज्वाइन करे तो बीच में जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री, इसलिए हम कहते हैं कि द एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल. कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू. थियरम 6 स्टेट
any angle subtended by minor arc in the alternate segment is acute, यानी minor arc के बनाया गया angle acute होगा, and any angle subtended by major arc will be obtuse. Always we need to remember it. Theorem 7 states that if a line segment joining 2 points subtend equal angle at two other point lying on the same side of the segment, the 4 points are concyclic. Concyclic circle हम आगे पढ़ेंगे. Next we are going to deal with the cyclic quadrilaterals. A quadrilateral is said to be cyclic quadrilateral if all its vertices lies on the circle. This is the major point we need to remember. किसी भी quadrilateral को cyclic होने के लिए उसके जो 4 corner point है वो circle के ऊपर lie करने चाहिए. Theorem 1 states that the sum of each pair of obtuse angle of circle cyclic quadrilateral is one angle 180 degree. यानी यहाँ पे we can see that ABCD is in cyclic quadrilateral, so angle A plus angle C must be equal to 180 degree, या फिर angle B plus D must be equal to 180 degree. The the opposite angle of a cyclic quadrilateral supplementary means the sum is 180. The second theorem states that the side of cyclic quadrilateral is reduced, then the exterior angle is equal to the interior opposite angle. ये तो हमें पता ही है. And the third theorem states the internal angle bisector of cyclic quadrilateral form a quadrilateral which is also cyclic. यानी कि इनके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर PQRS यहाँ पे एक और क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, वो भी साइक्लिक ही होगा. इसमें P और R का सम इक्वल टू Q और S का सम होगा, वो इक्वल टू 180 डिग्री होगा. Theorem 4 states that if two sides of cyclic quadrilateral are parallel, then the two remaining sides are equal and diagonal are equal. You should remember it. These are the major theorems for a cyclic quadrilateral. Moving further with tangents to a circle, from here we are going to start with the main topic of this chapter, because most of the times, or you can say every time, JEE has been asking one or two questions on circle topic, and majorly it has been asked from tangent or normal topic. And the question are of type that we need to find the number of you need to find the equation of tangent, or you need to find the number of common tangent to the circle, which we are going to study further. So the theorem 1 states that tangent to a circle is perpendicular to the radius. It is all but obvious that tangent will be always be perpendicular to the radius at that point. Sorry, it must be stated that at that point. And theorem 2 states if two tangents are drawn from a circle from an external point, then they are equal, they subtend equal angle at the center, and they are equally inclined to the segment. These three conditions are true for every point which has been out of the circle and a tangent has been drawn from that point to the circle. And third theorem states that if two chords of the circle intersect inside or outside the circle when produced, the rectangle formed by the two segments of one chord is equal to area to the rectangle formed by the two segments of the outer chords. So you can just see the question figure has been given. आगे बढ़ते हुए फोर्थ थ्योरम में दिया गया if PAB is a secant to a circle intersect the circle at A and B, and PT is tangent segment, then PA must be equal to PB must equal to PA must be equal to PB must be equal to PT square. So we should remember it. Fifth theorem states that if a chord is drawn through a point of contact of tangent to a circle, then angle which the chord makes with the given tangent are equal, and respectively angle formed to the corresponding alternate segments. The figure has been shown, you can just see it. Now moving further, the standard equation of circle, as we know, it is x minus h whole square plus 5 minus q whole square. We are not going to waste much time over here. Some special cases has been given. The center is an origin, then the circle equation will be square plus y square equal to r square. If radius of the circle is 0, then the x minus h whole square must be equal to y minus k whole square. Such circle are known as point circle, or it is just a point, not a point circle, it is just a point. So when circle touches x-axis, the equation of circle will be x minus h whole square plus y minus k whole square must be equal to b square. So if the figure has been given, you can just see it. Now for fourth case, if the circle touches y-axis, the equation is x minus h plus y minus k whole square equal to s square. The figure has been shown. Similarly, when a circle touches both the axes, then the equation of circle is x minus h whole square plus y minus h whole square into s square. Now when a circle passes through origin and center of the circle is h comma k, then the radius will be under root h square plus k square equal to r, and the intercept cut on the will be OP must be equal to 2h and OQ must be equal to 2k. So the equation will be x square plus y square minus 2h hx minus 2ky must be equal to 0. As a note has been given, the center of the circle may exist in any quadrant. Hence, for general cases, positive negative sign before h and
K must be used every time. So it is very important. Now moving further, we are going to deal with the general equation of circle. तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दोस्तों यहाँ दी गई है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, where c, g and f are constant and the center of the circle, हमें पता है कि center of the circle will be minus g comma minus f और radius of the circle will be r equal to under root g square plus f square minus c, और g f c हमें इस इक्वेशन से मिल जाएंगे. So notes has been given, you can just go through it. That the first note is, if g square plus f square minus c is greater than 0, r is real and positive and circle is a real value. You can just go through it. And the first 3 points are easy. Let us go for the fourth point. X square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 as 3 constant. To get equation of circle, at least 3 conditions should be known. Okay, a unique circle passes through 3 non-collinear points which we have studied. A general second degree in x and y is known as x square plus by square plus 2hx plus 2gx plus 2yfy plus c equal to 0, which it represents a circle only if a must be equal to b or xy must be equal to 0 and g square plus h square minus c must be greater than 0. So basically these three 1, 2 and 3 are the main condition for a circle to be in standard form. So taking next topic, we are going to deal with intersect cut by a circle on axis. So circle जब किसी एक्सिस पे इंटरसेक्ट कब करता है तो एक्स एक्सिस का जो इंटरसेप्ट होगा वो इक्वल टू होगा 2 इंटू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी के बराबर, और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट होगा वो 2 इंटू अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी. नोट्स दी गई है दोस्तों, आप इन्हें लर्न कर सकते हैं. दे आर नॉट गोइंग टू वेस्ट मच माई टाइम ओवर हियर. So moving further, we are going to deal with equation of circle in a diameter form. So it is very important question. I think so. Previous year JEE has asked one question on the diametric form of the circle. So let us see if a x1 y1 and b x2 y2 are the endpoints of the diameter of circle, and p xy is the point other than a and b on the circle. Then from geometry we know that angle APB must be equal to, as a result angle ABP must be equal to 90 degrees. Hence the slope of FE into slope of BP must be equal to -1. So putting the value, just we get the x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equal to 0. Hence this is the diametric equation of the circle which we are going to use. And let us see an illustration over it. Okay, we are going to see illustration further. So moving further, equation of a circle in parametric form. So the parametric equation of the circle has been shown that x square plus y square must be equal to r square, where x equal to r cos theta, y equal to r sin theta. This must be used, where theta must be in the range of 0 to pi by 2 because the circle completes only 0 to pi by 2 angle. So the parametric coordinates will be r cos theta and r sin theta. ये parametric coordinates है दोस्तों, हमें इन्हें याद रखना है. The parametric equation of the circle यहाँ पे दी गई है x minus h whole square plus y minus q whole square equal to r square. उसकी जगह हमें x की जगह h minus r cos theta और y की जगह k plus r sin theta का उपयोग करना है. तो the parametric equation of the circle will be x square plus y plus 2gx plus 2fy equal to 0, r x equal to minus g plus under root g square plus f minus c cos theta और y की ये दी हुई है पैरामीट्रिक इक्वेशन है दोस्तों. सो आगे बढ़ते हुए let us see an illustration which has been shown. You need to find the center and radius of the given circle. It is very easy. Let us take only one example. The equation has been given, but we know for a condition that अगर कोई सर्कल इसी फॉर्म में है जनरल इक्वेशन में और अगर हमें उसे रिप्रेजेंट करना है कि वो सर्कल है तो a और b मस्ट बी इक्वल टू 1 होने चाहिए. तो यहाँ a और b के कोऑर्डिनेट्स 1 बनाने के लिए हम पूरे इक्वेशन को 3 के साइड डिवाइड करेंगे. सो द इक्वेशन विल बिकम लाइक दिस, पुटिंग द वैल्यू ऑफ g as -4/3, f as -5/3 and c equal to 1. We get the radius and circle directly by putting formula. Going further, an illustration has been shown. A circle has radius equal to 3 units and center lies on the given line. We need to find the equation of circle which passes through the given point. It is very easy. Let the center of the circle which we need to find be alpha comma beta, and it lies on the line y equal to x minus 1. So beta must be equal to alpha minus 1, and the center is alpha into alpha minus 1. So hence putting the equation of circle in x minus alpha plus y minus alpha plus 1 whole square equal to 9. Putting the value we get alpha is -4,7. Hence the required solution can be this or this because both the calculation can be possible. So दोस्तों मैंने यहाँ तक आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, टेंजेंट, सबका थोड़ा थोड़ा नॉलेज दे दिया है. तो उसके बाद मैंने आपको
4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए, आप उन्हें जरूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको सॉल्यूशन ना मिले तो आप मुझे सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर अपने आने वाले वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपके सामने करके दिखा दूंगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। सो पॉइंट या तो सर्कल के ऊपर लाई कर सकता है, या तो सर्कल के अंदर, या तो सर्कल के बाहर। सो इन तीनों के लिए अलग अलग कंडीशन है। हमें सर लेट अस टेक अ सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c एंड द पॉइंट, हम उसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, जनरल पॉइंट x1, y1। सो द पॉइंट कैन बी लाई आउटसाइड द सर्कल और इनसाइड द सर्कल और ऑन द सर्कल। सो इसके लिए 3 कंडीशन है। क्या या तो ये बड़ा हो सकता है, या तो इक्वल टू हो सकता है, या तो 0 से कम हो सकता है। सो s1 कैन बी इक्वल टू ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन 0। So the greatest and the least distance of a circle A from a circle with center C and radius R is AC plus R, और उसका modulus भी difference. The power of a point with respect to circle, the theorem states that the power of a point, let us take a general point P x1, y1 with respect to the circle which has been shown x square plus y square 2gx plus y c is s1, and s1 equal to x1 square plus y1 square plus 2gx1 plus 2f y1 plus c. सो नोट दे के मैंने यहाँ आपको बताया है कि इफ P लाइज आउटसाइड, इनसाइड और ऑन द सर्कल, द पावर ऑफ सर्कल इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 रिस्पेक्टिवली। और सर्कल की इक्वेशन हमें तो पता ही है कि उसमें x स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2gx प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0 होना चाहिए। आगे बढ़ते हुए लेट अस सी एन इलस्ट्रेशन फ्रेंड्स। इफ P2,8 is an interior point of the circle, it has been given circle equation which neither touches nor they intersect the axis, then the set of for value of P must be, we have to find the values of P. So putting the value of 2,8 directly in the equation, we get P is greater than 96. So x intercept must be equal to 2 into under root 1 plus P, then 1 plus P must be less than, must be less than 0. So P must be less than 1. As a result, y must be equal to 2 into under root 4 plus P. So putting P must be equal to less than minus 4. तो मैंने आपको यहाँ पे डू योरसेल्फ के लिए 2 क्वेश्चन दिए, आप 2 क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिए फ्रेंड। अगर आपको सॉल्यूशन ना मिले या आपसे सॉल्यूशन ना हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में खुद सॉल्यूशन करके दिखा दूंगा। मूविंग फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू डील विद द टेंजेंट लाइन ऑफ अ सर्कल। सो कंडीशन ऑफ टेंजेंट से यहाँ दिखाई है मैंने, अगर P सर्कल P ग्रेटर देन R है यानी पॉइंट बाहर है, अगर P इक्वल टू R है तो पॉइंट टेंजेंट है, और P लेस देन और इक्वल टू 0 है तो पॉइंट अंदर है। सो इलस्ट्रेशन, डायरेक्टली यूजिंग इलस्ट्रेशन, फाइंड द रेंज ऑफ पैरामीटर ऑफ A फॉर विच वैल्यू दिस लाइज बिटवीन द सर्कल दिस एंड दिस विदाउट इंटरसेक्टिंग और टचिंग आइदर सर्कल। सो वी आर गिवन द सर्कल, 2 सर्कल दिए हैं, उसे हम जनरल फॉर्म में से सिंपल फॉर्म में ले लेते हैं। तो x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 1, और दूसरा सर्कल होगा x माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4। हमें दी गई है कि एक लाइन है विच लाइज बिटवीन द सर्कल इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन अपोजिट साइड। तो उनमें पॉइंट की वैल्यू डाल के हम उसे लेस देन 0 करें तो हमें आंसर मिलेगा 1 माइनस 2 माइनस a बाई अंडर रूट 5 मस्ट बी इक्वल टू ग्रेटर देन 1, और 1 माइनस 16 माइनस a ग्रेटर देन बाई अंडर रूट 2 ग्रेटर देन 2। उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ a इन द रेंज ऑफ अंडर रूट 5 2 रूट 5 माइनस 15 से लेके माइनस अंडर रूट 5 माइनस 1 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन जस्ट ट्राई इट, इट इज फॉर अ होमवर्क क्वेश्चन, इफ यू कांट डू देन टेल मी इन कमेंट बॉक्स। So the equation of tangent we are going to deal. So the equation of tangent is very easy. We are going to here for circle it is easy, but for tangent and parabola there are more complex equations which we are going to study. There must be some difficulty in understanding the all type of equation, but I will make a video in which I will just focus on how to use or how to learn these types of equation which are very heavily. So the first equation has been given over the tangent at a point x1, y1 on a circle is this circle which is x square plus y square equal to a square is x1 plus y1 equal to a square. In most of the cases only this equation has been going to use. So you must remember, sorry friends, in most of the cases these are only be used, so you must remember this. And the second most important equation is this. So you must remember these two equation. And the fourth point which is given, if I equal to mx plus c a straight line touching the circle this, then c must be equal to a into under root 1 plus m square, which is known as condition for a tangency of a line. So you must remember this point which has been highlighted. Moving further, it's a note has been given to get equation of tangent at a point x1, y1.
on any second degree curve, we must place x1 in place of x square, y1 in place of y square, x plus x1 by 2 in place of x, y plus y1 by 2 in place of y, and xy1 plus yx1 by 2 in place of xy, and c in place of c. So the length of tangent can be just find out by putting the values of the point in the equation and just taking its under root. And the equation of pair of tangent can be, let the equation of circle be this, and if any point outside the circle in the following, we draw two real and distinct tangent. एक पॉइंट बाहर हो जो सर्कल से, उससे हम दो रियल और डिस्टिंक्ट टेंजेंट बना सकते हैं, एंड कंबाइन द पेयर ऑफ टेंजेंट, तो उनकी इक्वेशन ये होगी. सो S1 मस्ट बी इक्वल टू t स्क्वायर. An illustration has been given over here, you can just go through it. It's a very easy question, you should remember it. So let A be a center of the circle, x square plus y square minus 2x minus 4y equal minus 20, and B and D are a point on this circle. Then the tangent be drawn at B and D which meet at C, then the area of quadrilateral ABCD we need to find. So hence the center is 1,2, tangent is from tangent at 16,7. There's a printing mistake over here. So putting the value, we get y equal to 7, and the tangent at minus 4 minus 2 will be 3x minus 4y equal to 0. So solving 1 and 2 equation, we get C as a point which is known as 16,17. Now you can just find out the area by simple geometry. Now normal to a circle, normal to the equation is this. The equation of normal at a point x1, y1 is this, but I would refer you to not remember this formula. In fact, you can just use the formula of tangent and put the same equation by putting the slope as minus 1, or as we know that normal is always perpendicular to the tangent, so you can use the formula that multiplication of slope of these two equation will be minus 1. By this formula you can just find out easily the equation of normal, but if you want to remember that, you can remember it's also a very easy formula that y minus y1 must be equal to y1 plus f by x1 plus g into x minus x1, and the equation of normal at any point x1, y1 of a circle x square plus y square equal to a is y by x must be equal to y1 by x1. And the third point has been stated that तीसरे point में कहा गया if x square plus y square equal to a is the equation of circle, then at any point t on this circle, a cos theta and a sin theta, the equation of normal is x sin theta minus y sin theta cos theta equal to 0. Illustration has been given, you can just go through it, it's very easy. So chord of contact which we are going to study, a line joining 2 points on a contact of a two tangent draws from a point outside the side of the circle is known as chord of contact. If two tangent PT and PT1 and PT2 are drawn from the circle, then P is to be the from the point T to the circle, this, and the equation of chord of contact will be T1 T2. यानी ये जो distance है या फिर equation of this line is known as the chord of contact. Now there are some points to remember, you should remember it, you can just go through it. Now director circle, the last topic or some last second topic of this chapter is which are going to deal is director circle. The locus of the point of the intersection of two perpendicular tangent to a circle is called director circle. So simply you can remember that for a director circle the equation will be x square plus k square must be equal to 2a square, or it can be remembered as x square plus y square equal to 2a square. So a director circle is a concentric circle which radius is under root 2 times the radius of the original circle. So you can just remember it. Illustration has been given, you can just go through it, it is very easy. I am giving you 1 minute time, you can just go through it. Okay friends, let us move forward. So the family of circle which we are going to deal, the equation of family of circle passing through a point of intersection of the two circle is S1 equal to 0 and S2 equal to 0. So S1 plus k, S2 must be, here k is a constant. Then the second point given, the equation of family of a circle passing through the point of intersection of circle S equal to 0 and line L equal to 0 is, यानी circle, दो circle की family की equation है S1 plus k times S2 equal to 0 होगी, और circle और line की equation x1 plus k L1 must be equal to 0. You may similarly you can go through the remaining point. So it are also very easy point. So an illustration has been given. Let us see the equation of a circle through the point of intersection of this and this, and touching the line this is, we need to find the equation of circle which is
passing to the point of intersection of these two given points and touching the line given over here. So the family of curve will be x square plus y square minus 2x minus 4y plus lambda times x square plus y square minus 1, which must be equal to 0. So just solving the equation, we get x square plus y square minus 2 by 1 plus lambda x minus 4 by 1 plus lambda y plus 1 minus lambda by 1 plus lambda equal to 0. Hence the center will be 1 by 1 plus lambda and 2 by 1 plus lambda. So radius will be this. So since the circle touches this line, hence the distance from the center to the line must be equal to the radius. Hence putting the formula of straight line, we can just solve for the value of lambda. Lambda must be equal to plus minus 1. Lambda minus 1 cannot be possible in case of circle, hence lambda must be equal to 1. So we get the equation of circle as option C. Hence the correct answer is option C. Now we need to find the angle between two circles. So you just remember the formula that cos theta must be equal to r1 square plus r2 square minus d by 2r1 r2, where r1 is the radius of circle 1, r2 radius of circle 2, and d is the distance between the two centers. Now if the angle of intersection of two circles is 90 degree, then the such circle are known as orthogonal circle, and condition for orthogonality is 2g1 g2 plus 2f1 f2 must be equal to c1 plus c2. You must remember this much only. Some important points has been given over, you can just go through it. So friends, thank you for watching our video. Here we have completed with this chapter circle. We will be meeting again with new chapter and with new fun. So till the time, like, share and comment and be happy.